quick high level overview first, like of NAT, and then I will get into like detail of each and everything. तो पहले लेकिन एक हाई लेवल ओवरव्यू देखते हैं NAT का, फिर मैं इसके बाद इसके डीप डाइव फिर उसके बाद हम लोग करते हैं. तो before I write down here, like let me explain some points. So in general, NAT is not any protocol, it's just address rewrite mechanism. So if it's the packet like IP or maybe TCP or UDP header, and here data portion. So basically what NAT does, it rewrites layer 3 address, which is IP address, and as well as layer 4 address, which is port address. Or maybe both, or maybe only IP address, but its capability is just to rewrite IP address and layer 4 address, and it's just a mechanism, it's not any protocol. So whether it's a router or firewall or any other device जहाँ पे भी हम लोग NAT configure करते हैं, पैकेट किस साइड से भी आया, no matter like whether it's from outside to inside, inside to outside, whether it's a private IP address or public IP address, no matter. If we have configured to replace or rewrite or translate an IP address to another IP address, so NAT does that. So NAT is just, you know, like it's a like there is no intelligence in it, because कोई प्रोटोकॉल नहीं है NAT, तो इसमें कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि NAT ओनली ट्रांसलेट्स प्राइवेट टू पब्लिक, एंड प्राइवेट आईपीज लाइक जो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं. सो प्राइवेट आईपीज जो डिफरेंट रेंज है हमारे पास, लाइक क्लास ए में 10 से जो रेंज स्टार्ट हो रहा है, क्लास बी में 172.16 से लेके 31 तक, एंड क्लास सी में एनी आईपी स्टार्टिंग फ्रॉम 192.168. सो ये आईपीज को आरएफसी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 1918 में डिफाइन किया गया है कि these IPs will not be assigned to any over the internet. ये किसी इंटरनेट के ऊपर किसी को असाइन नहीं होगा. जो प्राइवेट आईपीज हैं, they will be local to the network segment, या एक प्राइवेट यूज के लिए सिर्फ होगा. It means over internet प्राइवेट आईपीज are non-routable. इंटरनेट के ऊपर इन आईपीज की राउटिंग नहीं होती है, बिकॉज इंटरनेट के ऊपर जो राउटर्स हैं, आईएसपी राउटर और अदर राउटर्स, दे डू नॉट हैव राउट फॉर दीज प्राइवेट आईपीज, और ये अलोकेट भी नहीं किया जाता है. दूसरा जो आईपी हम लोग बात करते हैं, पब्लिक आईपीज ऑफ कोर्स दे आर लाइक ग्लोबली राउटेबल, क्योंकि इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है. इसका आईना जो ग्लोबल बॉडी है, उसके नीचे 5 रीजनल रजिस्ट्रीज होती हैं. जैसे हम लोग इंडिया में अगर बात करें तो एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, इसके नीचे फिर इंडिया में आयरिन है हमारे पास, आयरिन, और आयरिन से फिर हमें आईपी एड्रेस मिलता है यहाँ से, और ये ग्लोबली यूनिक होता है. ऐसी जो अमेरिकन रजिस्ट्री एंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, फ्री नेट अफ्रीका में, और फिर ये एपी निक के अंदर एशिया के सारे कंट्रीज आ गए. तो ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जस्ट टू मेक देम ग्लोबली यूनिक. एंड ऑफ कोर्स पब्लिक आईपीज मींस दे आर राउटेबल ओवर द इंटरनेट, और पब्लिकली यूनिक भी होते हैं. तो नेट को हम लोग डिफरेंट सिनेरियो में यूज करते हैं, बट मोटे तौर पे नेट को कहीं भी यूज करें, बेसिक पर्पस जो है नेट का वो यही है कि लेयर 3 और लेयर 4 दोनों एड्रेस को, लेयर 3 और लेयर 4 दोनों एड्रेस को रीराइट या ट्रांसलेट करना, और ये डेटा पोर्शन हो गया टीसीपी या मे बी यूडीपी. अब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक प्राइवेट आईपी को प्राइवेट आईपी से ही ट्रांसलेट करा रहे हैं, चलेगा. पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट हो रहा है, वो भी चलेगा. It means that not always necessarily means that it translate private IP address to public and public to private. No, ऐसा भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो. So because NAT is just address rewrite mechanism, किसी को हम किसी में भी ट्रांसलेट करा सकते हैं. कई सारे पर्पज हैं जहाँ पे हम लोग NAT यूज करते हैं. जैसे अगर भी एक छोटा सा पर्पज अगर हम लोग देखें कि NAT का क्या है जो हम लोग को पता होता है, तो एक तो छोटा सा पर्पज हम लोग को ये पता होता है कि अगर हमारे पास कोई भी डिवाइस है, इधर हमारा एक लैन सेगमेंट है, और यहाँ पे जो इंटरनल यूजर्स हैं, इफ दे ऑल हैव प्राइवेट आईपीज, लेट्स से आईपी एड्रेस of this network or subnet 10.0.0/8, and
they want to route traffic to internet. So definitely computer with the source IP from this IP pool will not be allowed to internet cloud, because जो भी आगे हमारा ISP का राउटर होगा या जो भी राउटर होते हैं नॉर्मली उसके ऊपर भी एक इनबाउंड ACL कॉन्फ़िगर्ड होता है. फर्स्ट थिंग, just to verify the source IP address, and if the source IP address belongs to private IP range or maybe multicast address or some other IPs, बहुत सारे IPs होते हैं जिनको हम लोग अवॉइड करते हैं अगर पैकेट वहां से ओरिजिनेट होता है तो यूजुअली फर्स्ट हॉप पे ही जाके ड्रॉप हो जाता है. और अगर नहीं भी ड्रॉप हो तो भी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जितने राउटर्स होंगे उनके राउटिंग टेबल में इन आईपीस का कोई रूट नहीं होता है. इट मींस हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ट्रैफिक इंटरनेट के ऊपर जा रहा है एटलीस्ट उसका जो सोर्स आईपी हो वो एक ऐसा आईपी हो जो ग्लोबली यूनिक हो, publicly routable over the internet ho. So for that we may configure this device to translate or rewrite source IP address which is private IP address to public IP address, जो हम लोग नॉर्मली नेट का मतलब समझते हैं. एक तो मोटे तौर पे ये पर्पज है. दूसरा पर्पज क्या होता है कि जैसे लेट्स से मेरे पास कोई फायरवॉल या कोई डिवाइस है, हियर इज लेट्स से DMG and in DMG I have a web server here or any server, और मैं ये चाहता हूं कि इस वेब सर्वर को बाहर से लोग इंटरनेट के थ्रू unknown users anybody should be able to access my web server. So definitely public IP address will not be assigned directly to this web server because this may lead to a lot of attacks and even like revealing IP address of our internal servers never recommended. So what we normally do here, we basically assign a private IP address to this web server, internal web server, any private IP address, and public IP address, whatever public IP we have obtained either from local service provider or maybe IRIN. We have both the options. So that public IP address is statically mapped with this private IP address. So let's say my public IP address is this. So this public IP address will be mapped with this private IP address. तो बाहर से जो रिक्वेस्ट आएगा वो इस पब्लिक आईपी पे आया, ट्रांसलेट होके प्राइवेट पे चला गया. तो इन दिस वे आउटसाइड यूजर्स will not be aware about this private IP address, my real IP address of web server. It means we may say that this NAT hides real IP address. तो जो real IPs हैं उसको NAT hide करता है. So it's another scenario, another situation when we configure NAT. So one of the reason of using NAT is just translating private IP to public IP address in order to have internet access, in order to route traffic to internet cloud. And technically it's a many to one translation because there could be 200, 500 internal clients. And by using a single IP address, we can allow them to have internet access. At the same time, if we want to hide real IP address of our internal servers or DMG resources, so again we may configure static NAT or maybe one-to-one mapping or maybe destination NAT. I will come to that point. अभी जब मैं deep dive करूंगा तो इसके बारे में बात करता हूँ. But ये दूसरा एक पर्पज होता है. तीसरा अगर एक छोटा सा सिनेरियो मैं बताऊं आपको, let's say मेरा एक डिवाइस है, it's my private network. My private network address is 192.168.1.0/24. इंटरनेट क्लाउड, ये इंटरनेट है. जैसे ये दूसरी कोई कंपनी है तो इसके प्राइवेट नेटवर्क में भी यही आईपी का रेंज हो सकता है 192.168.1.0 बिकॉज़ ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है. तो ग्लोबल यूनिक हो ऐसा जरूरी नहीं होता, यूजुअली ये तो लोकल यूनिकनेस होता है इसका. नाउ लेट्स से कुछ ऐसा हुआ कि दोनों कंपनी मर्ज हो रही है और बाद में आपको कुछ आईपी से टनल बना के साइट टू साइट कनेक्टिविटी करना है आपको यहाँ पे आईपी से टनल बना के VPN. And you want to have you want to have communication between these two segments. So look at the IP addressing here 192.168.1.0 and here again 192.168.1.0. So it's overlapping address हो रहा है. So of course कि एक तरीका ये होगा कि हम किसी साइट का IP चेंज कर दें, उसका सेगमेंट चेंज कर दें.
क्योंकि अगर नहीं कुछ ऐसा करते हैं तो ये राउटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई कंप्यूटर एंड इफ कंप्यूटर सेंड्स एनी पैकेट डेस्टिन टू 192.168 one segment or one network, so definitely packet will not be sent to the gateway, to the router. It's local routing sort of thing, because packet is sent to the gateway only if TCP/IP determines that destination IP address does not belong to the local segment. So when TCP/IP comes to know that destination IP address belongs to different IP subnet, then only IP configuration is checked, and if there is gateway address, then gateway MAC address is obtained by sending out ARP request packet. Once gateway MAC address is obtained, then a packet is encapsulated inside Ethernet frame and sent to the router, and then the rest of the job will be done by the router and some other devices in the path जो भी होंगे वहां पे. बट सवाल ये उठता है कि जब पैकेट राउटर तक ही नहीं जाएगा तो वैसी प्रॉब्लम है, हम दूसरे नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो इसका भी नेटिव में एक सोल्यूशन हो सकता है चाहे तो हम लोग, हालांकि क्रिटिकल केस नहीं है, ऐसा कहीं रियल लाइफ में यूज नहीं होता है, बट ये कॉन्सेप्चुअल अगर बात करें तो इसका भी सोल्यूशन नेट से हो सकता है. जैसे कि अगर हम लोग ये कहें यहाँ पे कि यहाँ के यूजर्स को बोले कि यहाँ का जो नेटवर्क है वो 192.168.1.0 नहीं है, बल्कि 192.168.3.0 है, और यहाँ पे जो बी लोकेशन है, बी लोकेशन के लोगों को बोले कि ए लोकेशन का जो आईपी सबनेट है वो 1.0 नहीं है, इस 2.0. एक्चुअल में ऐसा नहीं है. और यहाँ पे हम लोग और यहाँ पे नेटिंग कॉन्फ़िगर कर दे, तो यहाँ के लोग मींस ए नेटवर्क के जो यूजर्स होंगे, अगर उनको बी नेटवर्क में जाना होगा तो वो 3.0 सबनेट को एक्सेस करेंगे, 3.0 को यहां से, और ऐसी बी सेगमेंट के जो यूजर होंगे वो 2.0 का एक्सेस करेंगे. बट रियलिटी में तो ऐसा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी दोनों राउटर पे नेट कॉन्फ़िगर कर देंगे, नेट, ताकि अगर पैकेट ए से बी तक आया और डेस्टिनेशन होगा 192.168, नेटवर्क से नेटवर्क ट्रांसलेट कराएंगे 3.0, और यहाँ पे तो 1.0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3.0 को 1.0 में ट्रांसलेट करा देंगे हम लोग, और ऐसे ही वापस बी साइड से जो ए साइड में जाएगा ट्रैफिक, वो बी साइड के जो यूजर्स होंगे वो ट्रैफिक जब भेजेंगे तो वो 2.0 पे भेजेंगे. बट रियलिटी में 2.0 नहीं है यहाँ पे, इट्स ऑल वर्चुअलाइज्ड assumption, रियलिटी इज 1.0. फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे कि जो 2.0 है वो 1.0 में ट्रांसलेट हो जाए. So definitely we need to configure NAT on both the devices, router A and as well as router B, in order to overcome from this problem, like overlapping at this problem. But at least from conceptual अगर बात करें तो NAT can provide a solution to this problem as well. Let me take another example, very straightforward example. Let's say I have a router here R1 and another router R2, and here network behind R2 is 20.0.0.0 and the network behind R1 is 10.0.0.0, and the interface is here. Interface is, let's say, 12.0.0.1, and this interface is 12.0.0.2, directly connected. So definitely they both will have a route to directly connected networks. Now R2 will have a route to 20 network directly connected, and the network 12. Same here, 10 network, and another one is 12 network. Now let's say on R1 I have created a static route to 20 network via 12.0.0.2 and is connected, and is static, and here both connected. तो और यहाँ से मैं कोई पैकेट भेजता हूँ, ये जो पिंक कलर का है पैकेट R1 पे आया, R1 पे राउट है, इसने इसको दे दिया पैकेट, फिर यहाँ चला गया डेस्टिनेशन तक, and reply comes back to R2, so is the reply packet, and reply packet will have destination any IP address of this 10 segment. So R2 will look at the routing table, do I have any route for 10 network, and since here there is no route for 10 network, so what will happen, R2 will discard the reply packet. So I'm able to reach out the R2 network, but at least I will not get the response because there is no route to for the return traffic. So one of the ways is like just putting a route here in R2 in order to route back to 10 network. But let's say I do not have access to R2. I don't have access to R2 router, and even R2 administrator is not like willing to put a static route here. So another way could be like NAT here. NAT can provide solution to this problem, because if a packet
from R1, the packet, like whatever packet R1 sends to R2, if the source address is replaced or translated with this IP, 12001 IP, अगर ऐसा होता है 12001 IP address, then R2 has route to 12 network because it's a directly connected route, और पैकेट वापस आ जाएगा यहाँ से और फिर मैप करके यहाँ चला जाएगा. So without putting any route in R2 routing table, we would be able to reach R2 network, and even R2 would be able to send a response packet back to R1 because nothing. So R1 से जो पैकेट जाएगा वो R1 सोर्स IP को ट्रांसलेट कर सकता है अगर हम लोग कॉन्फ़िगर करें तो 12001 से. So यहाँ पे NAT का जो फंक्शनलिटी हुआ वो कहीं ना कहीं राउटिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, पब्लिक प्राइवेट आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट करना in order to conserve public IPs. It also hides real IP addresses by doing one-to-one translation or maybe destination translation, destination NAT sort of thing. Even NAT can be used to overcome from the overlapping address problem, जो यूजुअली VPN VPN में हो सकता है. ये सारे यूज केसेस हो गए NAT के. और NAT हम लोग राउटर पे, फायरवॉल, वायरलेस डिवाइसेस, बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, दे ऑल सपोर्ट दिस NAT. बट कितने तरह के NAT होंगे, कैसे कॉन्फ़िगर होगा, वो सब डिफरेंट होगा. अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सब जनरल बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट वेरी मच स्पेसिफिक टू Palo Alto because Palo Alto, like how many types of NAT supported by Palo Alto is different from the ASA firewall, and that will be different from the checkpoint firewall. So definitely configuration or implementation part, types of NAT will be different, but basic concept of NAT, basic purpose of NAT use cases, benefits remain same, no matter like whether it's Palo Alto or checkpoint. But yes, if when it comes to configuration part, how to configure NAT, so that may vary from vendor to vendor. For example, here in Palo Alto, like there are two major categories: source address translation and destination address translation. Under source address translation, there are three options: dynamic IP endport, static NAT, and dynamic NAT. Maybe in checkpoint, like terminologies are completely different because in checkpoint firewall we have hide NAT and static NAT. Only two types of NAT. If I talk about Cisco ASA firewall, there are a lot of types of NAT: twice NAT, manual NAT, policy NAT, static NAT. Cisco router, overloading, which is PAT, dynamic NAT, and static NAT. Only there are three types of NAT. So types of NAT always vary from vendor to vendor. Basic concept of NAT, it always remains same, no matter like which vendor or which product I'm talking about, would remain same. तो NAT का जो भी use case है कुछ ऐसे ही है. Let me write down some point, and here let me write down some point before I go to the next level. So NAT, in one sentence, we can say that NAT is address rewrite mechanism. Right. It's not any protocol, which is used to rewrite or translate layer 3 address. So layer 3 address means IP address, and layer 4 address, and layer 4 address means port address. NAT is address rewrite mechanism. So it's not any protocol. It's rewrite mechanism which is used to rewrite or translates layer 3 and layer 4 address. जो भी हम लोग NAT के बारे में बात करते हैं. अब अगर इसके हम लोग benefits के बारे में बात करें, so NAT benefits. So definitely it conserves public IP addresses, right? And how it conserves
by translating or private to public address translation. Many to one translation कह सकते हैं हम लोग. Many to one translation. Many to one translation means private to public IP translation. Public IP translation. So is one of the benefit. Another one hides real IPs, IP addresses. Static NAT. और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है डेस्टिनेशन NAT बोलते हैं उसको. Destination NAT. It also resolves routing issues and overlapping address problem. तो एटलीस्ट NAT में ये मेजर कुछ बेनिफिट्स हैं. अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ NAT इन पालो अल्टो, अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ पालो अल्टो फायरवॉल कि यहाँ पे कितने तरह के NAT सपोर्टेड हैं पालो अल्टो में. तो देयर आर टू मेजर कैटेगरी. वन, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन. Source address translation. Under source address translation, there are three options. अब इसके अंदर फिर हमें तीन ऑप्शंस मिलेंगे सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर. फर्स्ट, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट. सेकेंड, only dynamic NAT, and the third one is static NAT. Third one, static NAT. So there are three options here: dynamic IP and port, dynamic NAT, and static NAT. और here एक छोटा सा ऑप्शन भी यहाँ मिलेगा हमें बाई डायरेक्शनल NAT का. And then the next type of NAT here supported in Palo Alto firewall is destination NAT. Destination NAT. So destination NAT is another type of NAT, which is destination NAT. So in Palo Alto firewall, there are two options: source address translation and destination NAT. And if I can show you the, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ. अच्छा, जो ये दोनों ऑप्शंस हैं सोर्स NAT एंड डेस्टिनेशन NAT का, वो एक सेकेंड could access this. So let me log in here. So ओके, तो ये लॉगिन हो रहा है. तब तक मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं. तो ये दो तरह के NAT हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग. डायनेमिक पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट, जो कि सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर है आपके पास यहाँ पे. ये तो इसमें क्या होता है, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट को हम लोग कह सकते हैं मेनी टू वन ट्रांसलेशन. मेनी टू वन ट्रांसलेशन. Many to one translation. And the source IP address and source port address both are translated. Source
IP and source port both are translated here in dynamic IP endpoint. जो source IP है वो भी ट्रांसलेट होएगा और source address भी हो जाएगा. लेकिन जो पैकेट है, जो रिक्वेस्ट है, जो फर्स्ट पैकेट है, must be initiated by our internal users. मतलब inside to outside के लिए हो गया ये. Only inside to outside. Means request must be initiated by internal client. आउटसाइड से पहला पैकेट नहीं होना चाहिए. रिक्वेस्ट मींस द वेरी फर्स्ट पैकेट. और ड्रॉबैक क्या हुआ कि इसमें सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट दोनों ट्रांसलेट होता है. मेनी टू वन ट्रांसलेशन इसलिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अगर हमारा एक जो इनसाइड नेटवर्क है फॉर एग्जांपल let's say inside network is like 172.16.0.0/16. इनको हमें ट्रांसलेट कराना है इंटरफेस आईपी के साथ जो हमारे पास पब्लिक आईपी है या जो फायरवॉल का आउटसाइड इंटरफेस उसके साथ ट्रांसलेट कराना है इसको मेनी टू वन ट्रांसलेशन. सो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये इनसाइड नेटवर्क है. अब यहाँ पे जो हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करेंगे इसके लिए और एक नेट पॉलिसी करेंगे. तो हम लोग फिलहाल तो नेट पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो नेट पॉलिसी जो क्रिएट होगा यहाँ पे नेट पॉलिसी कुछ ऐसा होगा. नाम देना पड़ेगा रूल का. तो लेट्स से आपने नाम दे दिया एनी नेम इनसाइड टू आउटसाइड डीनेट और पैट और मेनी टू वन ट्रांसलेशन एनीथिंग पैट कुछ भी नाम दे दिया. इट्स जस्ट नेम सो गिव एनी मीनिंगफुल नेम. कुछ भी इसका और मतलब नहीं है. एंड देन सोर्स सेक्शन. अब यहाँ पे एक सोर्स सेक्शन होगा. अब सोर्स सेक्शन के अंदर वी नीड टू स्पेसिफाई सोर्स. और सोर्स में दो चीजें होंगी. अभी ये ओरिजिनल पैकेट है. सोर्स मतलब ओरिजिनल पैकेट सेक्शन कह सकते हैं. ओरिजिनल पैकेट सेक्शन मतलब नेट कब हो ओरिजिनल पैकेट सेक्शन क्राइटेरिया मैच करा रहे हैं हम लोग. तो इस ओरिजिनल पैकेट सेक्शन के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन. सो इस ओरिजिनल पैकेट सेक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे सोर्स एंड सोर्स व्हाट. Source, let's say any IP address of this network. Then source zone, and ये source address हो गया. So let me write down like this, address, and then source zone. Source zone is like let's say inside zone. Then destination address. So destination address is any because we do not know the destination address. And then destination zone. So destination zone is outside. And service protocol so will be any of course. ये तो मैचिंग क्राइटेरिया हो गया कि नेट कब करना है. And then ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन. जो नेट होगा वो कि क्या नेट करना है कैसे करना है. तो जब हम लोग ट्रांसलेटेड नेट पैकेट सेक्शन में जाएंगे ट्रांसलेटेड में. सो यहाँ पे ट्रांसलेटेड नेट या पैकेट सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन सेलेक्ट करेंगे. सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन विल आस्क सोर्स एड्रेस में कौन सा आपको लेना है. तो वहां पे हम लोग ले लेंगे डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट. देन विल आस्क कि किसके साथ नेट कराना है. तो लेट्स से मैंने इंटरफेस एड्रेस बोला आउटसाइड वाला इंटरफेस. देन विल आस्क लाइक कि व्हिच इंटरफेस एड्रेस. सो लेट्स से माय आउटसाइड इंटरफेस इज ईथरनेट 1/2 फॉर एग्जांपल. देन विल आस्क द आईपी एड्रेस. तो IP is equal to let's say 114.30.77. just an example. कुछ IP एड्रेस ये हम लोगों ने ले लिया. ये नेट पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं.
अब सवाल उठता है इसमें फ्लो कैसे होगा, किस तरीके से नेट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उसको जरा समझते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल